very hearty welcome to all our visitors and viewers and participants of the program titled Online Workshop on Geometric Shapes and its Modeling. आप सभी का स्वागत है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, NCSTC DST न्यू दिल्ली एंड MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MPCST भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कार्यशाला में, जिसका नाम है ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड इट्स मॉडलिंग. So once again very good evening to all our participants of the program, the online workshop on geometric shapes and its modeling. ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है एज अ पार्ट ऑफ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल मैथमेटिक्स डे दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल and National Council for Science and Technology Communication under the Department of Science and Technology, New Delhi. So आप सभी का स्वागत है बच्चों. जस्ट जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया गया था कि आफ्टर द इंटरेक्शन ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल मीट वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स आवर यूट्यूब चैनल. सो जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए. और मुझे कुछ मेल्स आ रहे थे कि दैट जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए प्रोग्राम में, क्योंकि कुछ हमें मेल्स आ रहे थे कि आपको लिंक नहीं भेजी गई है, लिंक नहीं मिली है. तो ऐसा इस केस में होता है कि आप लोग जल्दी में चेक नहीं करते कि आपने कौन सी ईमेल भरी है, ईमेल आईडी सही है या गलत है. तो जिन लोगों को ईमेल नहीं मिली है, जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आफ्टर द एंड ऑफ दिस गूगल मीट इंटरेक्शन हमारा ये पूरा प्रोग्राम शिफ्ट हो जाएगा यूट्यूब पे. तो बाय द टाइम मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी गूगल मीट में हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी इस चैट बॉक्स में अपना नाम, अपनी क्लास और आप कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें भेजिए जल्दी अपना नाम, क्लास एवं फ्रॉम वेयर यू आर पार्टिसिपेटिंग, नेम, क्लास and the place from where you are participating in this online workshop. सर घर का नाम डालना है या फिर स्कूल? Your own name, the using which you have registered yourself, जिस नाम का इस्तेमाल करके आपने रजिस्टर किया था. और मैंने कल भी कहा था, बहुत सारे यहाँ पर मैं ईमेल आईडी देख रहा हूँ जो कि बच्चों के नाम से नहीं है. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा whenever you are participating in any of our workshops और किसी भी वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने अकाउंट को यूज़ करिए प्लीज़. सभी लोग जल्दी सभी लोग अपना नाम, क्लास एंड कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भोपाल, मध्य प्रदेश या जहाँ कहीं से भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपना ईमेल आईडी अपना नाम, क्लास और अपना प्लेस ऑफ फ्रॉम वेयर यू आर पार्टिसिपेटिंग जल्द से जल्द हमारे साथ साझा करिए. सर घर का एड्रेस भी डालना है क्या? नो, ओनली द सिटी फ्रॉम वेयर यू आर पार्टिसिपेटिंग. Good evening, sir. My name is Meetal Agrawal from Class 6C, Kendriya Vidyalaya number 1, Bhopal. Okay, no need to announce over here. Just only use the chat box. आप during the workshop please mute रहिए, ऑडियो एंड वीडियो बोथ, और जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर करिए अपना नाम, क्लास और कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वेरी गुड नूतन, वेरी गुड. जल्दी सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ. जो हमें यहाँ बाकी सभी लोग बच्चों, आप लोगों को कल के मेल में साथ ही साथ आपको ईमेल हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक भेजा गया होगा. यहाँ पे एंड होने के बाद आप शिफ्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पर और वहीं से आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे. और वहाँ के चैट बॉक्स में भी जल्दी आप अपना नाम, अपना ईमेल आईडी आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन, मतलब ये गूगल मीट इंटरेक्शन के बाद आप वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी और कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जल्दी हमें भेजेंगे. सो ऑल राइट नाउ वी आर हैविंग 59 पार्टिसिपेंट्स विद अस. एक बार पुनः मैं अभी अपने सभी दर्शकों का, सभी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अभी, एवं जो हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल
और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एंड एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से कि इस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल मैथमेटिक्स डे में, जिसमें पूरे सप्ताह भर के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जिसमें कुछ वर्कशॉप शामिल है, जिसमें कुछ एग्जीबिशन जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और कुछ क्विजेस, ढेर सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं टू सेलिब्रेट द वीक लॉन्ग द लिजेसी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। सो आप सभी का स्वागत है। तो जो हम लोग को जहां कहीं से भी देख रहे हैं, जल्द से जल्द अपने चैट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब के चैट बॉक्स में, और जो हमारे साथ गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी अपना नाम, अपनी क्लास और आप कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें टेक्स्ट करिए, सो दैट वी कैन switch to our YouTube channel. Or all the participants of our YouTube of this Google Meet platform, I request you after the end of this entire interaction, I request you to please shift yourself to from Google Meet to the YouTube channel. The link has already been shared with you in our mail. Thank you. Excuse me, sir. We have to join through YouTube right now or after some time? After the end of this this Google Meet interaction, you need to join on our YouTube channel. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. सर, जिन्होंने गूगल मीट के चैट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल क्लास लिख दिया, उनको यूट्यूब की जब यूट्यूब में ज्वाइन होंगे यूट्यूब वाले में, तो फिर से लिखना है उधर। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। Sir, you're muted. सर, अभी यस सर। ओके, जल्दी जल्दी अपना नाम टेक्स्ट करिए, अपनी क्लास और कहां से आप किस सिटी से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, और साथ ही साथ हमारे इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर भी। सर, यूट्यूब चैनल पे अभी करना है? नो आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस वन। ओके, Sir, I want to say something. yes please. My name is Trisha, and I want to say that yesterday I attended your workshop. It was on triangle and its properties. It was really nice, sir. I enjoyed a lot. Oh, thank you sir, thank you for your kind words. May I know your good name please? Yes, sir. Yes, I'm sir. Trisha from Pune. Okay, thank you. From Pune you are participating. Okay, so you like the Yes, workshop? sir. Okay, thank you very much, Trisha. Thank you for your kind words for our workshop on triangles and its properties. Thank you very much. Sir, when we will start? Just in 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes we will start. By the time, once again, I request you to please text the details that I have asked for in the chat box of this Google Meet.
प्लेटफॉर्म। जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपना चैट बॉक्स में, आई गॉट अ फ्यू ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर एंड। ये संजीव मोंगी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भूमा, चिताक्षी, काव्या कपूर, रुशद, रेणुका, मेहुल, नैनेश, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इससे शिफ्ट होने से पहले गूगल चैट बॉक्स में अपना इस गूगल मीट के चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और क्लास और बाकी की डिटेल्स जिसकी मैंने बात करी उसको जल्दी जल्दी शेयर करिए प्लीज। Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमने 22 तारीख को ऑन द ईव ऑफ नेशनल मैथमेटिक्स डे हमने एक एग्जीबिशन भी, अगर आप नहीं जान रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक एग्जीबिशन भी इनॉग्रेट करी, डिजिटली प्रेजेंट करी अपने यूट्यूब चैनल पर। आप जैसे बच्चों के लिए और इवन बड़े लोगों के लिए भी जो गणित में या और भी इस तरह के क्षेत्रों में रुझान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो वो एग्जीबिशन अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एंड इट विल रिमेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप उसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। द नेम ऑफ दैट एग्जीबिशन इज द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवासा रामानुजन सर। And also I also request you to please do subscribe our YouTube channel so that in prior you can get the notifications of all such program। जो लोग हमें, स्पेशली जो लोग हमें भोपाल से बाहर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ शरिता परिहार्थ शाह जी ने, और जो भी लोग हमें भोपाल से बाहर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले सभी प्रोग्राम्स जो हम फ्यूचर प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कराएंगे उसकी सब आपको प्रायर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको प्रायर में सारे नोटिफिकेशंस आपको बहुत पहले ही मिल जाए। एंड आप अभी सभी लोग अपना कैमरा बंद रखिए प्लीज। बाय द टाइम 62 participants have joined us so far, and let me tell you, around more than 100 participants have registered themselves using our Google form. So we will wait for 1 to 2 minutes more, and thereafter we will shift on our YouTube channel. And yes. Yes, I am still getting a few of your messages. Please एक बार फाइनल लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक गूगल मीट में अपना डिटेल नहीं भेजी हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जल्दी जल्दी आप अपना डिटेल्स भेजिए सो दैट वी कैन मूव टू आवर वर्कशॉप। द टाइटल ऑफ द वर्कशॉप इज ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड इट्स मॉडलिंग। Okay, it's almost 3:23 now. I request all the participants to take leave from this Google Meet platform and switch yourself to our YouTube channel. जिन्होंने अभी तक अपना डिटेल रजिस्टर कर लिया है, जिन्होंने भेज दिया यहाँ पे, स्विच करिए जल्दी से जल्दी YouTube चैनल पर। Thank you very much. Excuse me, sir. Yes, please say. Sir, in the form there is written that the first 100 participants will get the maths kit. So, Yes. sir, how can we know that who will get the maths kit? That we will inform you later, but let me inform you and let me tell you, for this workshop, that is workshop on geometric shape and its modeling, यहाँ इस workshop के लिए you will not get any kit. That is only meant for the triangle and its properties workshop, and the circle and its properties workshop, and the third one that is on hyperbola, acrobatic stick. Okay. Okay, thank you, sir. Yeah. So we should leave now.
Yeah, though if you have texted your details, you may leave now. You may please take leave now. प्लीज सर एक दो क्वेश्चन होंगे सर कैन आई से आई हैव अ क्वेश्चन So you need to ask some question यस सर regarding what? So my question is that we write our name in the Google Meet chat and then we left the time and we write name and class and sit in YouTube. Yes. You are texting it on your mobile phone. You just copy it and paste it on that platform as well. Okay, it may be a kind of tedious job for you all. I can understand, but due to some necessary formalities, we need to do this. Okay, I request you to please do the same. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. Sir, can we continue on Google Meet also? No. No one will be there in the Google Meet platform. Only on our YouTube channel. Only. Thank you, sir. Yeah. Sir, do we need leave now? Yes, if you have texted your details, you may leave now and switch yourself to our YouTube channel. We are already on air. We are already live on our YouTube channel. Saucer is already there in the meeting. Let him be in the meeting. We will continue. जब बोलूँगा तब मैं जब बोलूँगा तब हाँ सर YouTube चैनल का लिंक क्या है? YouTube चैनल का लिंक मैम कल आपको मेल में भेजा गया था. अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में. आप चैट बॉक्स से देख सकती हैं. ओके जी बिल्कुल. जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जस्ट यू आर ऑलरेडी वेरी लेट. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज text your name, your class and from which place you are participating. Okay, fast, so that we can shift to our YouTube channel. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर यदि हम लोग ने हमारी डिटेल सेंड कर दी हो तो इसको लीव करना है? हाँ आप लीव करके जाइए यहाँ से. आप YouTube पे कंटिन्यू करिए. Thank you, sir. ओके थैंक यू सर. ओके, वेलकम. ओके, मैंने लिंक भेज दिया है. YouTube channel. सॉरी, मैंने ऑलरेडी लिंक भेज दिया है. आप प्लीज अगर आपको लिंक टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट ओपन यूट्यूब एंड टाइप रीजनल साइंस सेंटर भोपाल. ओपन यूट्यूब एंड टाइप रीजनल साइंस सेंटर भोपाल. द वेरी फर्स्ट पेज इज आर. ओके, हमारा ही है वो. Have you got it? Yes, sir. Okay. Please now, if you have texted your details, I request you to please. Welcome. If you have texted your details, I request you to please take a leave from this workshop, from this Google Meet platform.
Okay. So maybe I was on mute. Stop presenting. चलें। शुरू करेंगे। हम जल्दी जल्दी शुरू कर रहे हैं। अब बस अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे साथ बाहर से जुड़े हैं कुछ बच्चे, जो हम जिन्होंने किसी कारणवश लिंक को एक्सेस नहीं कर पाया, तो हमें आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन जो पार्टिसिपेंट गूगल मीट के भी थे, अपना नाम, अपना क्लास और कहां से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हमें जल्द से जल्द साझा करिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द वर्कशॉप इन 2 to 3 minutes। ओके, प्लीज जल्दी जल्दी आप हमें सारे पार्टिसिपेंट जल्दी जल्दी टेक्स्ट करें, सो दैट वी कैन स्टार्ट द वर्कशॉप ऑन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड इट्स मॉडलिंग that is being organized in during the celebration, week-long celebration of National Mathematics Day, celebrating the legacy of Srinivasa Ramanujan. सर की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है राहुल? नहीं मैंने पिन किया है। राहुल, माय वॉइस इज कमिंग? यस सर। फर्स्ट हाँ, हेमंत जी और जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार कर चुका, प्लीज़ मेरी बात समझिए की कोशिश करिए और आप हमसे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़िए, प्लीज़ यहाँ से लीव करिए। ठीक है। Yes, now I request Sahu sir to please, I hope हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, वर्कशॉप ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड इट्स मॉडलिंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वर्कशॉप, सो प्लीज डू join us on our YouTube channel. Okay. Welcome, all dear participants. A very good afternoon to all. My topic today is geometrical shapes. I hope that you must be seeing our screen on your windows. First of all, I will brief you what geometrical shape is all about. If you look at your lunchbox, you will find various food items resembling different shapes
You'll find cakes there, you'll find biscuits, you'll find some fruits, you'll find eggs, you'll find sandwiches. If you compare the shapes of these food items with various shapes that we encounter in our geometry, then you can correlate the shapes. As for example, in this lunchbox, the various food items that we find, they have different shapes. We have triangles out there, we have circles out there, we have rectangles out there, we have star shapes out there, we have shape like a heart out there. So if you correlate these various shapes, you'll find that you must have come across all these shapes previously in your daily life. Not only we find plane shapes, but also we find many solid shapes are there, many three-dimensional shapes are there. So in my presentation today, I'll try to tell you about different geometrical shapes in particular, and I'll tell you what is the mathematics behind all these geometrical shapes. We'll move to the next slide. Before going to tell you about the geometrical shapes, let me tell you what is non-geometric shapes. Okay, so we can classify the vast number of things in our daily life into two different kinds of shapes. One is a geometrical shape, another is a non-geometrical shapes. Okay, I will be focusing today entirely on geometrical shapes. But before going into the geometrical shape, let me try to tell you what is non-geometrical shapes actually. Okay, the simple definition, the common definition of non-geometric shapes says natural shapes which have no symmetry, such as rocks, stones, pebbles, shape of river, are non-geometric shapes. Natural shapes, most of the shapes that we see in nature are non-geometric shapes. They do not have any geometrical shapes in them. Okay. They do not have any symmetry. Symmetry means various parts of a shape doesn't look alike. If some part will look like a triangle, the other part will look like a circle. If some part will look like a circle, the other part will look like a pentagon, a square. Okay. There may be some shapes which are not irregular in shape. Okay. So a non-geometric shape is a shape that do not look alike. If you look at different parts of the shape, they may not look alike. They are different. Okay. So various objects that you see in nature, the rock, if you lift a piece of rock from the ground and if you hold it in your hands and inspect it, you'll find it a solid thing, isn't it? Rock is a solid thing, but it doesn't look like a sphere. A sphere, a perfect sphere, is a perfect spherical body. But if you look at a rock, you'll find it doesn't satisfy the definition of a sphere. Okay. Similarly, stone, if you lift a piece of stone and throw it to somebody, it may hurt him or her. But if you look at the shape of the stone, okay, it won't be called a geometric shape. It's not symmetrical. If one part of the stone is like a pointed thing, the other part is like a circle, that is sphere. The other part may be a plane thing. Okay, so it varies from part to part for a non-geometric shape. The sphere, a stone is an example of a non-geometric shape. Similarly, pebble is an example of a non-geometric shape. And if you look at a river, okay, the natural river originating from the hills, flowing into the valleys and going and opening up at the sea. Okay, the river is never straight. The river has many bends in it. Okay, as the river passes into the plains, it bends and curves, it makes loops, and ultimately mingles with the sea. So if you look at the shape of the river, we cannot call it a straight line. We cannot call it a geometrical curve. Okay, it is a non-geometric shape. With the river, various parts of the river, from all its way from the mountain to the sea, they differ from place to place. Okay, if some part is like a straight line, other part looks like a curve. If some bend look like a circle, the other bend will look like an U shape. So the river
is not a geometrical object. Soil, pebbles, stone, rocks are not geometrical objects either. So the various things that we see in nature, most of the natural things, they do not have a regular shape. They do not have a symmetrical shape. They are non-geometric shapes. But I will not be focusing much of my attention to non-geometric shapes. I will elaborate on geometric shapes only. So please have a look at this slide. The various geometrical shapes that we come across in geometry can be broadly classified into three categories. One is, the first category is one-dimensional shape. The one-dimensional shape is commonly referred to as a linear shape. I'll tell you what is one-dimensional shape actually. The other type is two-dimensional shape. The two-dimensional shape is commonly called a plane shape. The other shape is a three-dimensional shape. The three-dimensional shape is otherwise called a solid shape. So we can broadly classify geometrical shapes into three categories. One is a linear shape, the other is a plane shape, and the other is a solid shape. A linear shape has in one dimension. Okay, as you know, an object at best can have three dimensions: length, breadth, and height. Okay. If the object is having only one dimension, it has extensions along only one dimension only. Along one direction only, it has the extension, just like a straight line. We call it a linear shape. Okay. If the object has extensions in both the directions, that means it has length, it also has breadth, then the surface enclosed by the length and breadth will become a plane figure. We call it the plane shape. If the object is having all the three dimensions, it has length, it has breadth, it has height as well. It has all the three dimensions. We can have maximum three dimensions. We cannot have more than that. If the object has all the three dimensions, then it is called a solid shape. So my point is that based upon the number of dimensions that an object has, we can classify objects into three categories of shapes. It can be a linear shape. It has only one dimension. It can be a plane shape. It has two dimensions. It can be a solid shape. It can have three dimensions. Okay. Now, I'll give you some examples of linear shape. What is linear shape actually? A linear shape has only one dimension. As I've told you before, a linear shape should have a length only. If it has a length, it doesn't have any breadth. It doesn't have any height. It has extensions only along one direction. As for example, a railway track. Okay, if it is a straight railway track, the track goes along one direction only. Okay, it goes on and ends at infinity. Okay, so it is a one-dimensional entity, a railway track. Okay, if you look at the molecular world, there are some molecules which can be called a linear molecule. It has only one dimensional extension. I have given an example of a beryllium hydride molecule. There are three atoms in it. The central atom is a beryllium atom, and there are two atoms on either side. You will find the two hydrogen atoms, one on the left side, other on the right side. There are two hydrogen atoms. So the combined structure is a beryllium hydride structure. The angle between beryllium and hydrogen atom, there are two beryllium hydrogen bonds in it. One bond is on the left side, the other bond is on the right side. There are two chemical bonds. So if you measure the bond angle, then it will be 180 degree. 180 degree means it is a straight thing. It is a linear structure. It has only extension along one direction only. Okay, if you tailor different directions, that's extension along x-axis, extension along y-axis, extension along z-axis. So beryllium hydride, if we place it on our coordinate axis, it will have extension only along the x-axis or y-axis or z-axis. It will have extension only along one axis. It won't have extension along more than one axis. Okay. So beryllium hydride is a linear molecule. Railway track is a linear structure. It goes on and on along a particular single direction. Okay. So there are many examples of a linear shape in nature. If we extend a thread
If you tie one end of the thread to a pole and you straighten the thread and tie the other end of the thread to another pole, making sure that the thread is not bent, then you will find the thread is a linear structure. It has extension along a particular direction only, not along both directions. After linear structure, after linear shape, I like to tell you what is the plane shape all about. The definition of plane shape is that a plane shape has only two dimensions. As I told you, we can have maximum three dimensions. At best, a body can have maximum three dimensions: length, breadth, and height. Okay, but a plane shape doesn't have all these three dimensions. It has only two dimensions. That means it has a length, it has also a breadth. Okay, look at the rectangle. Look at the red figure on your left, top left. It is a rectangle. A rectangle is a plane figure. That is because it has length and breadth only. It has two dimensions only. It doesn't have any height. If the rectangle would have height, then we will call it a cuboid. Okay, but the rectangle doesn't have any height. Okay, it's just a plane figure. It has two dimensions only, length and breadth. It doesn't have height. That's why rectangle is a plane figure. Similarly, if you look at the circle can be called a plane figure because the circle has extensions along x-axis and also along y-axis. So circle can be regarded as a plane figure. It doesn't have any height only. It doesn't have any height. If a circle is having height, then it might be a cube. A cube is a solid figure, a solid shape. But we are dealing with plane shapes now. The shapes which have two dimensions only, length and a breadth, doesn't have any height. So a circle will be a plane shape. It has length, it has also breadth. Similarly, a square. If you look at the square can be called a plane shape. It has a length, also it has a breadth. It doesn't have any height. If the square is having height, then it has extension along the z direction. In that case, the square will be transformed into a cube. Okay, in that case, cube will be a solid shape. But we are restricting our discussion to plane shape only in this particular slide. That the square having only two dimensions, it is a plane shape, not a solid shape. Similarly, a triangle. What we call a triangle. A triangle is a closed figure bounded by three sides. A triangle has length, it has extensions along length, it also has extensions along the breadth. Okay, so the various points situated and located in the triangle can be plotted in an xy plane, in a xy axis. Some points will be on the x-axis, some point will be on the y-axis, and various points of the triangle should have an x coordinate and should have also a y coordinate. The triangle has extensions along two directions only. It doesn't have an extension along the z or the third direction. That's why triangle is a plane shape, not a solid shape. Similarly, quadrilateral. A quadrilateral is a closed figure bounded by four sides. Okay, a rectangle may be quadrilateral, a square may be quadrilateral. But a quadrilateral is also a plane shape because it has two dimensions only. It has a length, it has a breadth. It doesn't have any height. Okay. Similarly, a pentagon. A pentagon is a closed figure bounded by how many sides? Bounded by five sides. A pentagon is also a plane figure because it has an extension along the x-axis, it has an extension along the y-axis, and all the points on the pentagon can be represented on the xy plane or the Cartesian plane that we call. Okay, the pentagon doesn't have any height. So all the shapes that doesn't have any height, they have only a length and the breadth, can be called a plane shape. But before plane shape, I've told you is the linear shape. A linear shape has only one dimension, length. But a plane shape, in addition to the length, they have another dimension, that is the breadth. But remember a point. What we call a point? How many dimensions does a point have? A point doesn't have any dimension. It doesn't have any length. It doesn't have any breadth. It doesn't have any height. A point is a dimensionless entity. Unlike a point, a railway track has only one dimension. So also a beryllium hydride molecule.
Similarly, the various geometrical shapes that I have showed you in this particular slide, rectangle, circle, square, triangle, quadrilateral, pentagon, they have two dimensions, length and breadth, so they can be called a plane shape. Now, solid shapes. What we call the solid. Okay, solid doesn't mean that it is one of the phases of matter. As you read in chemistry, there are three phases of matter: solids, liquids, and gases. Okay, I'm not talking about these solids, these solid molecules, these solid objects. I'm telling about the geometrical solid shapes. An object that occupies space are called solid shapes. A solid shape must have three dimensions. It has a length, it has a breadth, it has a height. So it has extensions along all the three axes, three coordinate axes. It has extension along x-axis. It has extension, some part of the solid has extension along the y-axis. Some parts of the solid has extension along the z-axis. That means it has length, it has breadth, it has height also. Okay, so such an object which has all the three dimensions, length, breadth, and height, it can occupy some space in air. Suppose we have a vessel, we have a bucket full of water. If we dip a cubical shaped stone into the water taken in the bucket, it will displace some water will overflow and spill down on the ground. That is because the object that we are dipping inside water, maybe it is cube or a cuboid, the object occupies some space because it has three dimensions. As you putting the object into water, it occupies certain space in water. So the extra amount of space that has been occupied by the object inside water, so that amount of water has been displaced and coming up and ultimately overflowing and spilling down on the ground. So my point is that a shape which has three dimensions, the solid shapes, they occupy space in air. They occupy certain space in air. Okay. Now, the second point says that their surfaces are called faces. Look at the figure. We are showing a solid cube shape here, or cuboid shape, we can call it. Okay. They have surfaces. Okay. It has 6 surfaces actually. And the surfaces are called faces. The faces meet at edges. Look at the face on the top. This is a face on the top. This is a face on the side. So if we extend the face on the top and if we extend the face on the down. Sorry for the interruption. Harsh and the person who is using email ID gamer, first of all, I request you to change your email ID and then join us only on YouTube channel. I'm again and again I'm getting requests to admit in the Google Meet platform. I request you all, the program is being is already shared on our YouTube channel. So watch the live program on our YouTube channel only. No one is allowed to take part in this Google Meet platform. So please don't. Yes, okay. So please continue yourself in the in the YouTube channel. Yes, sir, Sao, sir, please continue. Sorry for the interruption, all the participants. Now this slide shows about the solid shapes. What we call a solid has 3 dimensions. It's all solids occupy space in air. Now the faces of the solids, the surfaces of the solids are called faces. Look at the solid here on the diagram. It is a cuboid. It has 6 faces, 6 surfaces. So all these 6 surfaces can be called 6 faces. So a cuboid or a cube has 6 faces because it is bounded by 6 plane surfaces. Okay, so the surfaces are called faces. Now faces meet at edges. Look at the face on the top. This is a face. This is a face on the side. If you extend these 2 faces, they will meet and intersect at a straight line. 2 planes will intersect at a straight line. Okay, there is a plane at the top. There is also a plane at the side. These planes are nothing but surfaces. If we extend these 2 surfaces, okay, like this and like this, they'll cut away each other, they'll intersect each other along a straight line. Okay, so wherever the 2 faces meet or intersect, it produces an edge.
A cuboid or a cube has how many edges? It has 12 edges. If you count, it will have a 12 edges. There are 4 edges on the top. 1, 2, 3, 4. Similarly, there are 4 edges on the side, on the bottom. 4 plus 4, 8. There are 2 edges on the left and 2 edges on the right. On the sides, there are total altogether 4 edges. Top 4 edges, bottom 4 edges, and side 4 edges. So altogether, we have 12 edges in a cuboid or rectangle. So my point is that the surfaces are called faces, and the faces meet at edges, and the edges meet at vortices. Okay, look at the vortices. Vortex. Vortex is the singular term, and the plural term will vortices. Okay, vortex is otherwise called a corner. Otherwise called a corner. Okay, look at this corner. At this corner, we are having 3 edges, 3 straight lines. This is one straight line, this another straight line, and this another straight line. So 3 straight lines or 3 edges will meet at a point, at a corner point, and for a solid shape, this corner point is called a vortex. So a solid shape should have a vortex, a corner, should have a straight line wherever 2 faces meet. It should have an edge. It should also have a face. Face is plane surface, edge is a straight line, and vortex is actually a point. So a solid shape should have all these 3 elements: a point, corner, a straight line, that is the edge, a plane, that is the face. Some examples of solid shapes are cones, cuboids, spheres, cylinders, and cube. There are many solid shapes all around us. Okay, I'm talking about geometrical shapes only. Okay, sphere has neither any edge nor a vortex nor vortices. If you look at a sphere, hold a spherical marble in your hands, you will find the sphere doesn't have any corner. It doesn't have any edge. It has only a curved surface. A sphere is only having a single face, a surface mounting all the sides of the sphere. It doesn't have any corner. It doesn't have any edge. Now coming to the next slide, I like to show you some familiar solid shapes. Okay, I've shown you 2 figures here, 2 photographs here rather. One is the Leaning Tower of Pisa, and the other is the great Egyptian pyramid of Giza. Okay, first let us refer to the right side picture. We have a pyramid structure, pyramid shape here. The square base pyramid. All Egyptian pyramids are square base pyramid. That means their bases are squares. The shape of the bases are squares. Okay. This is a great Egyptian pyramid of Giza, built by Pharaoh Khufu, one of the emperors of Egypt, in the year 2560 BC. That means roughly some 2500 years ago. That means it is built some 2000 plus 2500, 4500 years ago. The pyramid has been built. In the ancient structure, it is one of the tallest man-made objects. The height of the pyramid is 481 feet. 481 feet. Even pyramid is so large that it can be seen from space. It is a solid shape. Why it is solid shape? Because it has length, it has breadth, it has height as well. So it has all the 3 dimensions. Okay. So to represent any point on a pyramid, we require 3 coordinate axes. We require the x-axis, we require the y-axis, we also require the z-axis, because it has extensions along all the 3 dimension directions. Okay, pyramid is a solid shape, man-made solid shape. Similar, the Leaning Tower of Pisa, you might have heard about the Leaning Tower of Pisa. Both the objects, Leaning Tower of Pisa and pyramid, they are found place in the 7 wonders of the world. Leaning Tower of Pisa is a cylindrical object. If you consider the Egyptian pyramid, each face looks like a triangle. However, the base is like a square. It has
four triangular surfaces, 1, 2, 3, 4. Okay, on all the four sides of the square, four triangular surfaces has been built, and all these four surfaces, triangular surfaces coming off and meeting at a point, forming the apex. Okay, so each face of a pyramid looks like a triangle, and leaning tower of Pisa resembles a cylindrical shape, cylinder. It is also one of the ancient objects built in 12th century AD. Height is 183 feet. But astonishingly, the Leaning Tower of Pisa is leaning. That means it is not placed vertically over the ground, gradually tilting and leaning to one side. Okay, I will not be going detail into the mechanism of the leaning structure, but if you consider the shape of the leaning tower, it, it can be called a cylinder. It can be a cylindrical shape. If you consider the shape of a pyramid, an Egyptian pyramid, its face of the Egyptian pyramid would resemble a triangular shape. So these are some of the familiar solid shape, historical familiar solid shape that you come across in history. There are many solid shapes all around us, like a stone, a pebble, and geometrical shapes like a cone, cylinder, sphere. We find the innumerable number of familiar shapes all around us. But I've chosen to give you only two historic shapes. One is the Leaning Tower of Pisa that we find in Rome, Italy, 12th century AD is the construction period. And other one is the Great Egyptian Pyramid of Giza that we find in Egypt, 2560 BC is the construction period. These are two the tallest man-made objects known. Although there are innumerable number of solid shapes all around us, solid geometrical shapes, but we will be discussing today about the Platonic solids only. Because within 1 or 1.5 hours time from my presentation, it is not possible to discuss each and every geometrical solid shape. I will be focusing my attention today only on Platonic solids, only on those solids which are called Platonic solids. Okay, Platonic solids are otherwise called the regular polyhedrons. Okay, there are only 5 Platonic solids. Okay, there are only five solids which can be called Platonic solids, not more than that. Only 5 solids, only 5 Platonic solids are possible in nature. Nature are restricted only to 5 Platonic solids. Okay, what are these solids? One is a tetrahedron. Tetra means 4. It has 4 faces. Okay. The other one is a cube. The cube is otherwise called hexahedron. It has 6 faces. A cube has 6 faces. So a cube is otherwise called hexahedron. It is an octahedron. Next solid shape is an octahedron. It's at 8 faces. Then dodecahedron. Dodecahedron has 12 faces. Icosahedron has 20 faces. So depending on the number of faces, we used to nomenclate different Platonic solids. Tetrahedron means it is solid shape having 4 faces. Hexahedron cube means it is solid shape having 6 faces. Octahedron means it is solid shape having 8 faces. Dodecahedron means it is solid shape having 12 faces. And icosahedron means it is solid shape having 20 faces. Tetrahedron is 4, cube is 6, octahedron is 8, dodecahedron is 12, and icosahedron is 20. These are the number of faces, mind you children. Okay, so these 5 shapes collectively are called Platonic solids. A Platonic solid can have maximum 5 shapes, not more than that. Now in the subsequent slides we'll be discussing details about these shapes. The Platonic solids, why it is called Platonic solids? Because it discovered by the Greek mathematician philosopher Plato. The Greek mathematician philosopher Plato, way back in 360 BC, discovered that there could be 5 and only 5 regular polyhedrons possible in nature. Nature can have only 5 regular polyhedrons or 5 solids. Why these are called regular polyhedrons? I'll also tell you in the subsequent course of my presentation. Okay. So, for the time being, please to remember that nature can have only maximum 5 regular polyhedrons. Okay.
What are these 5 regular polyhedrons? I've told you: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron. Okay. We do not know more hadrons after that. Okay. These are discovered by Plato. So in honor of Plato, these 5 solids are known as Platonic solids. Okay. Now, what are regular polyhedrons? Okay, as I told you, tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron. Okay, these are collectively called as regular tetrahedrons or Platonic solids. So, what we call a regular polyhedron? Why these will not be regarded as an irregular polyhedron? Why these are regarded as a regular polyhedron? The basic definition of a regular polyhedron is that these are 3-dimensional polygons. Okay, each face is like a polygon. Polygon means they have closed figures having more than one side. A closed figure should have minimum 3 sides. Okay, so their faces are polygons. Their faces are basically closed figures having 3 or more than 3 sides. Okay, their face may be a triangle. If it is a regular tetrahedron, each face looks like a triangle. Okay, if it is a cube, each face looks like a square. For an octahedron, each face will look like a triangle. For a dodecahedron, each face will look like a pentagon. A pentagon is a plain closed figure having 5 sides. If it is an icosahedron, each face will look like a triangle. So basic definition of a regular polyhedron is that a regular polyhedron are 3-dimensional polygons. The 3-dimensional means they have length, they have breadth, they have height. Okay, they have extensions along all the 3 dimensions, directions, whose sides are all of equal length and whose angles are all equal. Okay, now refer to this tetrahedron. Look at this side. Okay, look at the other side. Look at the green side, the side shaded with green. Look at the other side shaded with brown. Okay, if you compare these 2 angles, you'll find, okay, these 2 triangles are basically similar triangles. Okay, that means these 2 triangles are basically the same. Their sides are equal. Not only the sides are equal, but the angles are also equal. Okay, so we have all the triangle. We have all the sides which are triangles. All the triangles are same. Their sides are same and their angles are same. The tetrahedron has 4 faces. Each face is like a triangle, and all the angles are similar. All right. That is why it is a regular polyhedron. Okay. If one side is a triangle, other side is like a square, it won't be called a regular polyhedron. Okay. Or if one side is smaller triangle, other side is a larger triangle. If one side is a equilateral triangle, the other side is an isosceles triangle. It is not a regular polyhedron. For a regular polyhedron, all the sides should have the same geometrical shape. Okay. If it is a triangle, the triangle shape should be maintained throughout the structure. Similarly, a cube is a geometrical polyhedron. It is a regular polyhedron because all the sides looks like a square. Okay. If you compare 2 sides, this side and this side, you'll find these 2 squares are basically have the same dimension, same measurement. Okay, they have the same side, they have the same angle. That's why it is a cube is a regular polyhedron. If one side of a cube is square, the other side is a rectangle, then first of all it won't be called a cube. We cannot call it a cube. We cannot call it a regular polyhedron as well. A regular polyhedron should have sides which are similar. If one side is square, all other sides must be square for a regular polyhedron. It doesn't that one side is square, the other side is a triangle. So if you ever find that kind of polyhedron, one side is a square, other side is a triangle, it can never be called a regular polyhedron. For a regular polyhedron, all the sides are the same geometrical shape. Similarly, if you look at octahedron, you'll find all the sides are same. Dodecahedron, 12 faces, all the sides are same. If you look at icosahedron, 20 faces, you'll find all the sides are same. For icosahedron, all the sides are triangle.
For dodecahedron, all the sides are pentagons. For octahedron, you'll find all the sides are triangles. For cube, you will find all the sides as squares. For tetrahedron, you'll find all the sides are triangles. Okay. Not only all the sides are triangle, but also all the sides are equal triangles, identical triangles. Okay. In that case only, we can call it a regular polyhedron. So regular polyhedron is a three-dimensional polygon whose sides are all equal and whose angles are also equal. The 5 Platonic solids, these are the 5 Platonic solids possible in nature. Plato, way back in 250 BC, discovered that nature allows only 5 regular solids. These are tetrahedron, 4 faces, octahedron, 8 faces, cube or hexahedron, 6 faces, icosahedron are 20 faces, and dodecahedron, 12 faces. A tetrahedron has each face resembling a triangle. A octahedron has each face resembling a triangle. A cube has each face resembling a square. An icosahedron has each face resembling a triangle. A dodecahedron has each face resembling a pentagon. Okay. So these are the 5 Platonic solids. Now we'll discuss about this individually. First of all, consider the tetrahedron. Tetra means it is 4. So what is 4? The number of edges is 4. The number of vertices is 4. No. Tetrahedron means number of faces is 4. It is bounded by 4 faces, and it moves. So how many faces does this figure have? Okay, we can see on the sides there are 3 faces. This is one face, this another face, this another face. So there are 3 faces all around the sides. Now the bottom is also another face, but in this picture the bottom is hidden from us. Okay, it is not visible to our view. So if you consider bottom, then there are altogether 4 faces in a tetrahedron. Okay, so for a tetrahedron, number of faces is 4. Number of vertices, what is mean corner points, is 4. How? There are 3 corner points on the ground, on the base. 1, 2, 3. There is another corner point at the top, because tetrahedron is a solid figure, na? Okay. It has height. So there is a corner point at the top, this one, and there are 3 corner points on the base. So altogether there are 4 vertices in a tetrahedron. Number of edges is 6. Number of edges means straight lines. Wherever 2 faces meet, they produce a straight line. Okay. So here, this face and this face meet along this straight line. So this is one edge, 1. This another edge, 2. This another edge, 3. So there are 3 edges on the sides, but on the base there are also another 3 set of edges. 1, 2, 3. So on the base we find 3 edges. On the sides, on the body of the tetrahedron, we find another 3 edges. So altogether 3 plus 3 is 6 edges is there in a tetrahedron, right? And each face is like a triangle. Each face looks like a triangle. Doesn't each face look like a triangle? Yes, it looks very much like a triangle. So a tetrahedron should have number of faces 4, should have number of faces vertices 4, should have number of edges 6, and each face is just like a triangle. That is a tetrahedron. Now after tetrahedron, we'll come to the second Platonic solid, that is a cube. A cube is otherwise called a hexahedron. Hexa means 6. So a cube is a closed solid bounded by 6 faces, because it is a hexahedron. 6 faces. 6 minimum faces are required if the faces are squares. So 6 square minimum faces are required to make a cube. If you have 5 faces, 5 square faces, it won't make a cube. It won't make a closed figure. So minimum 6 square faces are required to make a closed figure called cube. Each face looks like a square. How many faces does a cube have? 6. 1 at the bottom, another at the top. 2. And there are 4 faces on the sides, left, right, and front and rear. So there are 4 faces on the sides, and there are 2 faces, one on the top,
other at the bottom. Total altogether there are 6 spaces in a cube. How many number of vortices does a cube have? Corner points I'm talking about. Vortices means corner points. Okay, cube has 8 vortices, 8 corner points. There are 4 vortices on the top. 1, 2, 3, 4. 4 vortices on the top, and there must be another 4 vortices at the bottom. 1, 2, 3, 4. So on the bottom there are 4 vortices, on the top there are another 4 vortices. Altogether there are 4 plus 4, 8 vortices. Okay. 6 spaces and 8 vortices is there in a cube. But how many number of edges? Edges means straight lines. Wherever 2 places meet, they produce a straight line. So the cube should have 12 edges, 12 straight lines. Look at the top. On the top, we find 1, 2, 3, 4. 4 edges at the top. There must be another 4 edges at the bottom. 4 plus 4, 8. On the left, 1, 2. 2 edges. On the right, we find another 2 edges. On the sides, 2 plus 2, 4. Top 4 edges and bottom 4 edges. In total, 4 plus 4 plus 4, 8 edges. So for a hexahedron or cube, it should have 6 faces, 8 vortices, and 12 edges. And each face of the cube will look like a square. This is the second Platonic solid. Now come to the third Platonic solid, which is an octahedron. Okay. If we have 2 tetrahedrons, if we place 2 tetrahedrons one above the other, so that they will be sandwiched at their bases, okay, then we'll find a different figure, that is an octahedron. So octahedron is made up of 2 tetrahedrons placed on their bases. Octahedrons, the very word octa signifies that it should have 8 faces. All right. There are 4 faces on the top, because tetrahedron, 4 faces at the bottom. Octahedron. And number of vortices is 6. Number of edges is 12. Each face is like a triangle. This is all about the third Platonic solid, that is octahedron. Now after octahedron will come to dodecahedron. Dodeca means 12. So the very word dodeca, the return dodeca signifies that it has 12 faces. Okay, number of faces is 12. Each face is like a pentagon. Look at the pentagon. Pentagon is a closed plane figure having bounded by 5 sides. This is a pentagon. 5 sides in it. 1, 2, 3, 4, 5. This is a pentagon. Each face of a dodecahedron is like a pentagon. For a pentagon, number of vortices, corner point is 20. Number of edges is 30. And each face is like a pentagon. Your fourth Platonic solid. And the fifth and the last Platonic solid is called an icosahedron. An icosahedron should have, icosa means 20. In Greek, it is 20, Greek language. So icosahedron has 20 faces. Number of vortices is 12. Number of edges is 30. Each face is like a triangle. Okay. So these are the number of faces, vortices, and edges for all the 5 different Platonic solids, starting from tetrahedron to icosahedron. Okay. Now there is a famous formula called Euler's formula that relates by a mathematical relationship to the number of faces, number of vortices, and number of edges of a regular tetrahedron. Euler's formula applies only to regular tetrahedrons. Euler's formula never applies to non-regular tetrahedrons, non-regular polyhedrons. Euler's formula applies only to regular polyhedrons. Euler's formula applies only to Platonic solids. Euler's formula never applies to non-Platonic solids. There are 5 Platonic solids, so Euler's formula will apply to these 5 Platonic solids only. So it is a mathematical relationship amongst the F, B, and E. It is a mathematical relationship among the number of faces, number of vortices, and number of edges for these regular polyhedrons only. These are the regular polyhedrons starting from
tetrahedron to cube to octahedron to dodecahedron to icosahedron. So Euler formula says F plus V plus F minus E is equal to 2. V, what is V? V is the number of vortices. What is F? F is the number of faces. What is E? Is the number of edges. So V plus F minus E is 2. So that formula will be satisfied by all these 5 regular polyhedrons. Let's see how. Okay. Let's see how. Starting from tetrahedron. It is number of faces 6. It is number of vortices 8. Number of edges 12. Okay, if you apply Euler's formula to tetrahedron, 6 plus 8 minus 12, how much? 2. Okay, so a cube satisfies Euler's formula. If you apply Euler's formula to an octahedron, number of faces is 8, number of vortices is 6, number of edges is 12. 8 plus 6 minus 12. That means 14 minus 12 is 2, again 2. So octahedron also satisfies Euler's formula. If we consider dodecahedron means it has 12 faces, 20 vortices, and 30 edges. Okay, now let's apply Euler's formula to dodecahedron. 12 plus 20 minus 30 is how much? It's again 2. So dodecahedron also satisfies Euler's formula. Now let us apply Euler's formula to icosahedron. Okay, icosahedron has number of faces 20, number of vortices 12, number of edges 30. So according to Euler's formula, 20 plus 12 minus 30, that means 32 minus 30 is again 12. So icosahedron satisfies Euler's formula. So Euler's formula is a mathematical relationship between amongst the number of vortices, number of faces, and number of edges that satisfies the 5 Platonic solids only. Okay, it is applicable for Platonic solids only. It won't be applicable to solids which are not Platonic in nature. Okay, this is a Euler's formula at a glance. A tetrahedron, a cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron, the number of faces, edges, vortices is depicted here. F plus B minus C is 2 for a tetrahedron. 4 plus 4 minus 6, 8 minus 6 is 2. Similarly, you can check the validity of Euler's formula to all other shapes, all other Platonic shapes. Okay. Now, in my subsequent slides, I like to show you Platonic solids in nature. How in nature we come across different solids which resemble Platonic shapes only. Okay, nature is full of Platonic shapes. Okay, maybe it is flowers, maybe it is petals, maybe it is shape of a virus. There are Platonic solids in nature, Platonic shapes in nature. So my point is that, before showing you the shapes, I can tell you how we can build the Platonic shapes from a sheet of paper. Suppose you like to make a tetrahedron. This is a tetrahedron having 4 faces. Okay, you take a piece of paper. Now take a triangular piece of paper. Now divide this triangular piece of paper into 4 equilateral triangles. 1, 2, 3, 4, like this. Okay. Now, if you fold these triangles, fold this triangle on the left side, fold this triangle on the right side, fold this triangle on this side. Okay. The central triangle should be left intact. Okay. The central triangle has 3 sides. Now, so on each side there is a triangle. Left side, right side, and this side. Okay, if you fold these 3 triangles, okay, now these 3 surfaces will come off and meet at a point, that is apex, and you'll end up with a tetrahedron shape. So by paper folding, okay, the art of paper folding is known as origami. So you can fold following the
mechanism of origami, you can fold paper, triangular piece of paper, and you can build a tetrahedron stuff. You can easily check it out at your homes. Okay. A tetrahedron is also called a triangular pyramid. I've told you an Egyptian pyramid is basically a square-based pyramid, but if you have a pyramidal structure and is based like a triangle, then it can also be called a tetrahedron. Okay. Now you must be conversant in your daily life how to fold paper and to make a cube. Okay. Okay, if you look at the tetrahedron, the tetrahedron, if you look at the tetrahedron, okay, if you look at a tetrahedron has 4 faces, 6 edges, and 4 vertices. So tetrahedron should have 4 vertices, not 5 vertices. Okay. Now, Platonic solids in nature. This is how you can fold paper to make a tetrahedron. This is how you can fold paper to make a cube. To make a cube, okay, you should have a paper that should be demarcated with 6 squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 squares. Okay. Now you fold the squares and you can make a cube. Okay. Tetrahedrons in nature, methane molecule is a common example. A typical example of a tetrahedron is a methane molecule. Methane molecule, there is a single carbon atom and there are 4 hydrogen atoms bonded to the central carbon atoms. So methane molecule CH4, it is a tetrahedral structure. Okay, look at this methane. This is a central carbon molecule. This is a central carbon atom, and there are 4 hydrogen atoms. Okay, placed at different directions. Okay, so there are 4 carbon hydrogen bonds. This is one CH bond, carbon hydrogen bond. This is another carbon hydrogen bond. This is another carbon hydrogen bond. This is another carbon hydrogen bond. There are altogether 4 CH bonds in a methane molecule. And for this structure to be stable, because all the adjacent bonds will repel, and the structure should be such that it should be stable and it should have minimum energy configuration. Okay, so for this, the 4 carbon hydrogen bonds should be pointed to the 4 corners of a regular tetrahedron. Look at this figure here. This is the central carbon atom, and the 4 carbon hydrogen bonds are along the 4 point to the 4 corners of a regular tetrahedron. A regular tetrahedron has 4 corners, 4 vertices. Okay, so the 4 CH bonds are pointing towards the 4 vertices. Okay, and the angle between 2 adjacent carbon hydrogen bonds for a regular tetrahedron should be 109.5 degree. Okay, so methane molecule is a typical example of a regular tetrahedron. Cubes in nature, okay, in certain minerals, pyrite is a mineral, we find that the crystal structure is basically a cubical structure. Similarly, octahedron, we also come across octahedrons in many minerals. Most diamonds are shaped like octahedrons. Alums are also octahedral in shape. Fluorides, what is fluorides? Fluoride is calcium fluoride, CF2. Fluorides are also octahedral in shape. Okay, so this is fluoride or fluorspar. It's a mineral. A crystal is also like a octahedron in shape. Similarly, dodecahedron, there are certain pyrite crystals, not all. Some pyrite crystals are cubical in shapes. There are certain other kinds of pyrite crystals which are dodecahedron in shape. Each face looks like a
pentagon. Okay, pyrite is the most abundant sulfide mineral. Similarly, icosahedron, okay, we find many icosahedrons in mineral crystals. Like quartz crystal, this is a quartz crystal, it is an icosahedron, it has 20 faces. And this is a virus depicted here known as herpes virus. Okay, herpes virus, its body is basically an icosahedron in 20 faces. Okay, so these are the regular polyhedrons. Okay, but there are some non-regular polyhedrons also. Euler's formula won't apply to a non-regular polyhedron. What are non-regular polyhedrons? Non-regular polyhedrons are basically solid shapes whose faces are not similar. Okay, prism is a non-regular polyhedron because the top face is a triangle, bottom face is a triangle. What about the side faces? The rectangles. Okay, that's non-regular polyhedron. Pyramid, the side faces are all triangles, but the bottom face may be a triangle or a square. If the pyramid, Egyptian pyramids are square-based pyramids, bottom face is a square, but the side faces are triangles. So all the faces are not alike. The pyramid is a non-regular solid. Similarly, cone, the bottom face looks like a circle, but the top face is a curved one. It's not a regular solid. Cylinder is not a regular solid. Sphere is not a regular solid. So these are the non-regular solids. Okay, there are many non-regular solids around us in nature. Hundreds, thousands of millions of non-regular solids. But you must understand that there are only 5 regular solids in nature. These are the 5 regular polyhedrons. These are tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron. So my point is that before concluding, okay, I'd like to emphasize the point that you should remember again and again that although nature allows for million number of non-regular solids, but nature is restricted only to 5 regular solids. These are the Platonic solids. I am giving you details about all these 5 Platonic solids. Thank you. तो साहू सर ने जैसा हमें बताया कि ये जो शेप्स हैं, इन शेप्स को हमें प्रिंट निकालना होता है, तो हमने कुछ प्रिंट निकालने के लिए आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 3D प्रिंटर रखा हुआ है। और इस 3D प्रिंटर की हेल्प से 3D प्रिंटर की हेल्प से हम कोई भी शेप्स निकाल सकते हैं। तो मैंने ये डोडेकाहेड्रॉन का शेप निकाला है और मैं आज आपको यहाँ मॉडलिंग में सिखाऊंगा कि कैसे हम 3D प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि 3D प्रिंटर रखा है और 3D प्रिंटर पे बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं उन्हीं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं और आप उनको यूज़ करके आप उन शेप्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना होगा www.tinkercad.com। मैं अभी आपको अपना टैब खोल करके दिखाता हूं। ऑल्दो आपको उसको लॉगिन करने के लिए आपकी एक
जीमेल आईडी होनी चाहिए और आप जीमेल आईडी से उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे आप उसको किसी शेप को बना सकते हैं। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे रहेगी, आप बाद में इसको देख करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको ये मॉडलिंग करना सिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैंने कुछ शेप्स निकाले हैं, स्फेयर ये मैंने निकाला है, ये 3D प्रिंटर से मैंने निकाला है, ये 3D प्रिंटर से मैंने शेप निकाले हैं। और ये देखिए ये शेप्स मैंने 3D प्रिंटर से निकाला है, और मैं अब आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम इनकी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और मैंने कुछ शेप्स निकाले हुए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है www.tinkercad.com, और tinkercad.com पे टाइप करने के बाद tinkercad.com टाइप करने के बाद जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आप इसको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लें। और अगर आप जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना इसमें कोई भी आप अपना इसमें अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है और मैंने कुछ शेप्स बना करके रखे हैं। आप इनको किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इनको बनाया है। तो इन शेप्स को बनाने के लिए पहले मैं आपको सिखा दूँ कि कैसे इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो पहले यह कॉपी करने का ऑप्शन है, Ctrl+C आप नॉर्मल कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल प्लेन फिगर की प्रिंट के लिए आपके पास प्रिंटर्स होते हैं, और अगर आपको 3D प्रिंटर की बात करनी है तो अगर 3 डायमेंशनल फिगर्स निकालना है यानी 3 डायमेंशनल कोई ज्योमेट्रिकल फिगर शेप्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको 3D प्रिंटर की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली ये 3D प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं और थोड़े से महंगे होते हैं ये, लेकिन 3D प्रिंटर आप इस पर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स आप इसमें निकाल सकते हैं। तो मैं आपको टिंकरकैड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिंकरकैड ओपन फ्री टू एयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको डिज़ाइनिंग में जाना है, डिज़ाइनिंग पोर्शन में, और आप अपने शेप्स को किसी भी एंगल से आप यहाँ पे इसको शेप को मोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है ये कॉपी करने के लिए है, ये पेस्ट करने के लिए है, और ये डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट एंड रिपीट करने के लिए, और ये डिलीट करने के लिए। यहाँ कुछ आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप करना है, अगर आपको 2 शेप को मिला करके एक करना है तो यहाँ पे आप ग्रुप कमांड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अनग्रुप कर सकते हैं, 2 शेप को अलग अलग करना हो तो अनग्रुप कर सकते हैं। और ये आपके लिए अलाइन के लिए, अगर आप अलाइन करना चाहते हैं किसी शेप को 2 एक दूसरे शेप के ऊपर रख के चढ़ना चाहें तो उनको अलाइन करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको मिरर इमेज बना सकते हैं अगर आपको उसको मिरर कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको किसी भी शेप में, आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इनको मोड़ सकते हैं, किसी भी एंगल पे आप इनको शेप को घुमा सकते हैं, और कहीं भी इसको ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। और आप इनकी कोई भी डायमेंशन को, शेप को चेंज कर सकते हैं। आप इनके डिस्टेंस, लेंथ को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ फिगर्स बना करके रखे हैं, और जिन फिगर्स के बारे में मैंने आपको, हम लोग सर ने बताया, उन फिगर्स को आपको बताने यहाँ रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको, जो हमारे पास नॉर्मल फिगर्स यहाँ बेसिक शेप्स मिलते हैं, उसमें आपको ये क्यूब मिलता है, एक सिलेंडर मिलता है, कोन मिलता है, रूफ मिलता है, राउंड रूफ मिलता है, और टेक्सल मिलता है, पिरामिड मिलता है, वेजेस मिलता है, हाफ स्फीयर मिलता है, पॉलीगॉन मिलता है। कुछ बेसिक शेप्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। देखिए आइसोहेड्रॉन भी, यहाँ पे आइसोहेड्रॉन भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन शेप्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये क्यूब लिया है, अब आप क्यूब को आप देखें कि क्यूब को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके क्यूब को, रेडियस को चेंज करूंगा तो ये देखिए कि स्फीयर बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसके स्टेप्स में चेंज करना शुरू करूंगा तो देखिए आप इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। आप इसके लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, आप इनकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, या हाइट को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें बेसिकली आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आप इनके शेप्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए
मैंने शेप्स को चेंज कर दिया है, तो ये अब इसने देखिए ये अलग अलग शेप्स को बना सकते हैं। और बाद में आप इनको इन शेप्स को मैं प्रिंट करना भी बताऊंगा कि कैसे आप इनको 3D प्रिंटर पे आप इनको अलाउ करके आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक क्यूब से। अब हम बात करते हैं कोन को लेते हैं। तो ये अलग अलग शेप हैं। इन शेप्स को आप अगर आप इनका बेस रेडियस को चेंज करें तो देखिए, ये देखिए अब इनके साइड्स को कम करेंगे तो ये देखिए एक पिरामिड शेप में आ गया, ये पिरामिड शेप में आ गया। और आप इनको कैसे भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके शेप्स को बना सकते हैं। अब अगर आप किन्हीं दो शेप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर आप एक बॉक्स रखना चाहते हैं, तो बॉक्स को ऊपर कीजिए और यहाँ इसके ऊपर मर्ज कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसको शेप से। अब देखिए ये इस तरीके से आप इनको शेप को मर्ज कर सकते हैं। फिर अगर आप इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको अलाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये दोनों शेप एक दूसरे से मिल गए हैं, ये दोनों शेप एक दूसरे से आप मिल गए। अब इन शेप्स को आप एक कंबाइंड शेप करने के लिए आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इनको ग्रुप कर दीजिए, तो देखिए ये एक शेप बन जाएगा। ये देखिए ये एक शेप बन गया। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग शेप्स को मिला करके भी आप एक शेप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बना करके रखे थे पहले से, जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये देखिए ये कुछ शेप्स मैंने बना करके रखे हैं। तो ये शेप्स देखिए आप, ये डोडेकाहेड्रॉन है, 12 फेसेस है, ये टेट्राहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, यहाँ पे आपको वो सारे शेप मिल जाएंगे। नॉर्मल देखिए ये आपका डाइस है, आप डाइस भी बना सकते हैं। ऑक्टाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन, आइसोकाहेड्रन, आपका यहाँ पे ये सारे शेप्स मैंने इनको बना करके रखे हैं। और ये शेप्स भी आप कोशिश करेंगे अपने तो आप बना सकते हैं। आप भी इसको बनाना बहुत इजी है। सबसे अच्छी बात ये फ्री में अवेलेबल है, तो आप इनको आराम से आप इस पे बैठ करके, टिंकरकैड पे बैठ के आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं। अब आप अगर आपके पास 3D प्रिंटर है या आपके स्कूल में 3D प्रिंटर है, आप कहीं भी इसके ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको ये एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन में आप फॉर 3D प्रिंटर आपके पास OBJ, STL और GLTF फाइल करके होती है। आप इन किसी भी फाइल में आप इसको सेलेक्ट कर करके इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये आपका यहाँ डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आप इस फाइल को ले जा करके अपने 3D प्रिंटर में डाल देंगे और ये 3D प्रिंटर से आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि इस तरीके से सबसे पहले इनकी मॉडलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडलिंग कैसे सीखते हैं। तो यहाँ कुछ बेसिक शेप्स हैं, आप बेसिक शेप से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, उनके साइजेस में चेंज करके, उनके लेंथ में चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ ही से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको 20 कर दिया तो कहीं पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको आप मूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो आप इनको चेंजेस करके आप इनके शेप्स को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप इनके डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं।
और ये जो ग्रिड है यहाँ देखिए, ग्रिड 1 mm का ग्रिड है, तो एक बॉक्स इसका 1 mm के बराबर है। तो आप इसको किसी भी शेप में कहीं भी आप इसको मोल्ड करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा 3D मॉडलिंग के बारे में। आपको मैंने प्रिंट करना भी सिखा दिया कि कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे। आप कोई भी शेप, आप अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं। आप तो यहाँ पे आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंजेस करके आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप जो मर्जी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये शेप तैयार हो जाएगा। और आपको मैंने इसको एक्सपोर्ट करना भी बता दिया है, मैंने और कुछ शेप्स बना। देखिए, फेसेस पे लिखने का तरीका ये है, ये मैंने कुछ शेप्स बना करके रखे हैं। ये देखिए, ये जैसा अभी सर ने बताया था आपको मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर भी हम इस पे लिख सकते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर भी हम इस पे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बना करके रखा है। आप चाहें कोशिश कीजिए, आप खुद से कोशिश कीजिए और इनको बनाने की कोशिश कीजिए, इन शेप्स को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये रिंग है, अलग अलग आपके पास ये रिंग की शेप है, आप इनको चेंजेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ आपके पास और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं, ये देखिए कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को शेप को आप निकाल सकते हैं। जैसे ये एग का शेप है, तो ये देखिए एग का शेप है, ये इन एग के शेप को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले से बने हुए बहुत सारे शेप्स हैं, तो आप टेक्स्ट एंड नंबर्स में जाकर के आप नंबर लिख सकते हैं। जैसा अभी किसी ने पूछा था कि मैं नंबर कैसे लिखूंगा, तो इन नंबर्स को आप इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, किसी भी शेप के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और इसको यहाँ पे जैसे देखिए, मैंने इसके उसके ऊपर शेप को पहले देखिए, अब ये नंबर इस पे देखिए P लिखा गया है इस पे। देखिए, अब ये यहाँ पे होल करेंगे तो इस पे लिखा हुआ आएगा, होल में लिखा हुआ आएगा। तो जैसा आप किसी ने मुझसे क्वेश्चन यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा था कि हम इस पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब इस पे शेप पे लिखा गया। अब आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो इस पे होल में लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे P जो है ऐसे P जो है इसमें छपा हुआ आपके पास आएगा। तो अब इसमें कैसे भी शेप को आप प्रिंट कर सकते हैं, कैसे भी आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर है और आपको इसको लिखने के लिए www.tinkercad.com बस आपको इसको यूज़ करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके बेसिक शेप्स हैं। फिर आपके पास कुछ स्पेशल शेप्स होते हैं, जैसे आप देखिए अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग जो बने हैं प्री डिफाइंड शेप्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कनेक्टर्स देखिए, ये कुछ कनेक्टर्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर्स के लिए मैं बता ही चुका हूँ, ये कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को आप एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ है यहाँ पे बेसिक शेप। इन बेसिक शेप्स की हेल्प से आप कोई भी शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पिरामिड है, देखिए पिरामिड के साइड्स आप देखिए, आप इसकी कितनी भी साइड वर्टाइसेस आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका रूफ टॉप है, और आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे, जिनको आपको डिलीट करना है उस बटन को आपको डिलीट भी कर सकते हैं। तो और करने के बाद एक बार आप इसको जरूर ग्रुप कर दीजिए, ताकि ये शेप जो है वो फाइनल शेप हो जाए। आप देखिए ग्रुप करने से ये शेप फाइनल हो गया है, बिल्कुल ये शेप फाइनल हो गया है। ये देखिए ये शेप फाइनल हो गया है। ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये अनग्रुप अलग अलग शेप्स आपके निकल जाएंगे। बस आपने ये कमांड बनाया है और इस कमांड को आपको सीधे 3D प्रिंटर में आपको देना है। तो 3D प्रिंटर के बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं। आप इन शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी STL फाइल को लेकर के अपने प्रिंटर में दे करके, आप STL फाइल को अपने प्रिंटर में दे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मॉडलिंग का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूँ, और आपके जो भी क्वेरीज हैं मैं अब आपके यूट्यूब के शेयर करके आपको बताता हूँ। मैं तो यहाँ पे मैं अपना सेशन ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई थिंक आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद एक क्वेश्चन है।